हेलो एंड वेलकम टू यार ये नहीं करना मेरे को वेलकम टू स्क्रम podcast. दिस हाँ भाई सो तेरे को नाम नहीं पसंद स्क्रम नहीं मस्त था। दिस हाउ यू नॉट गेट फायर्ड Advait actually thought of a good name for one. ए चल रे लास्ट वाला He भी has सो a good history of naming things Last वाला like क्या? podcast and recipes. ब्रो and then अभी यार social- हमने पूरा पॉडकास्ट ही नेम कर देना चाहिए था उसको बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं। रेसिपीज को रेसिपीज किया बट अब तक हमने अकाउंट बनाया नहीं है podcast, सो podcast. No. कुछ भी हो सकता है। यस इंट्रो में नाम तो मेरे को ही डालना है। चैनल नाम तो जा रहा है स्क्रम। पॉडकास्ट तो नहीं डाल रहा हूँ। It's gonna be scrum with an exclamation mark. हाँ Because it's- उल्टा That नहीं is- हो रहा that है is- ठीक है no, वो that's- आई दिखेगा ना फिर। अब वो scrum ही लगेगा रे येड़े. Anyway, so what this podcast is very abstract. Basically, whatever we talk about साथ में meetings में ये we might do it here. So you might see us talking about what The app, not App. about the app, about our general social stuff, media, about very controversial stuff. no controversial stuff. No controversial stuff. कुछ I'm a working controversial professional. हाँ। I can't do stuff like that now. हम लोग कंट्रोवर्सीज करते ही नहीं है। Very sorry. अच्छा। हम लोग नहीं करते. तू तो बोल ही मत। ये किधर controversy? अरे उसके बाहर ही निकलते हैं तो समझ नहीं आता मैंने जो सुना है। Advait is so impatient. He's already making the Twitter handle. अरे तो कोई I'm ले लेगा joking. Don't make it. Oh my god. मैं नई एनर्जी भाई हैंडल करने को मेरे को चार ट्विटर क्या बात करे मैंने बना दिया अभी चल अभी बना दिया तो इसको Oh my God. इनएक्टिव करके रख देंगे Oh my अपन। god. Advait wants to be a content creator magnet. तू मेरे नाम पे क्या बिल फाड़ रहा है तेरा पॉडकास्ट नहीं चल रहा था बोल नहीं ऐसा कुछ नहीं. पॉलिटिकली कुछ तो ट्विटर पे न्यू भी स्टार्ट किया ना अनइंजीनियर्ड HQ। अरे हाँ सो हेडक्वार्टर्स Headquarters. हेडक्वार्टर। यू डिडंट नो दैट Bro. क्या This is why HQ? High So- quality। वो What? HD होता है। HD? Definition होता है वो। You really thought HQ is high quality? I didn't know what HQ was और तभी तू बहुत annoying था तो मैं सोचा तेरे को कौन पूछने को आएगा। ये तभी annoying नहीं था भाई, हमेशा से annoying। I'm gonna handle the Twitter for Unengineered HQ also. That वो account किसी को दे नहीं रहा मैं. Because I'm gonna tweet the most developer niche stuff there where fine, that's fine. only the developers can relate to. ये account unlock. So log out कौन किया? अच्छा नहीं है. फैन क्यों बन गया? फैन बंद है क्योंकि ऑडियो के लिए बोलते हैं उसको. See, this is when you know you have started new podcast जब ऐसे questions आ रहे हैं. We have legit no topics. So okay, Happy we realization. जब मैं तेरे को कल से बोल रही है टॉपिक डिसाइड करके नहीं, See, I that's have the a topic. जब मैं और ऋतिक पॉडकास्ट करते थे राइट द अनइंजीनियर्ड पॉडकास्ट यू विल हैव नो आइडिया हम कब डिसाइड करते थे. इट वाज राइट बिफोर प्रेसिंग रिकॉर्ड दैट वी डिसाइडेड कि क्या बोलना है क्या टॉपिक्स है. इट वाज जस्ट वी आर गुड एट दिस ऐसा फिर ये आगे. No. So basically, we had a theme on the Unengineered podcast. Right? Yeah. It was tech. And हम लोग तो मैं सुबह रोज उठ के बिजनेस न्यूज़लेटर पढ़ता हूँ. टेक फॉलो वेरी एक्टिवली. Subtle brag. But Subtle brag. समथिंग टेल्स मी अभी टेक का बात होना no, that was the reason that This we is had not a lot tech of- podcast. Yeah. This is not an anything कोई podcast. नहीं बताएगा नया फोन कौन सा आ रहा है। This is an everything podcast. क्योंकि हमें भी नहीं पता. Let's be honest. उसको पता है वो पढ़ता है OnePlus is messing up मेरे को कुछ नहीं business पता. podcast. मैं नहीं OnePlus पढ़ रहा हूँ. 10 सुनने में आ रहा मैं है। नहीं पढ़ रहा हूँ. OnePlus हाँ. 70 में खरीदा. I ये stopped देख अब caring चालू हो about. गया अबे नहीं थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं. They released everything. लीक कर करके एक हाँ. चीज लीक करके. ये OnePlus 9 RT अभी है. everything हाँ 9RT आ रहा है। RT, OnePlus PCR, TV सुनने में आया RT. मेरे को। लोग अभी नया ये तो सुना लग रहा है. OnePlus 9 RT PCR. Easy peasy. It started with OnePlus 1, 2, 3 and eventually they stopped making it good. It I have started a with, script जिसमें मैंने पूरा research किया in depth about BBK and its connection with all सबसे. you might listen to stuff that we never released because Yeah. Atik stopped making them and someone stopped editing them. Yeah. We got onto other projects. That's why I stopped it. जो भी बंद कर दिया अभी क्या बंद कर दिया? जो भी बंद कर दिया Correct. बीच में भी नहीं. OnePlus वाला we are making a explainer with in-depth research. We never actually went and made it because script के आगे it never went. We were supposed to collaborate with someone जिसका name I'm not gonna take, but that never came through and stuff like that. So that is one project we did not do. And other one is, are we gonna do that project? फिर मैं नहीं बोलूँगा. होने वाला है। यही blackmail है. If you don't do the project, then इधर बोलूँगा. We were also working on a project which was an animated video series. 18 minutes हो गया. So I have to shut up now because every 18 minutes we have to go and reset the camera. तू हाजमोला का बॉटल कैसे क्रैक कर दी? गिरा रहे हो भाई. What have we been up to since the last time we released an unengineered podcast? We stopped that podcast क्योंकि बोरिंग हो रहा था. हाँ एक तो बोरिंग हो रहा था. We didn't
no, we didn't have a definite direction to take it to. हमारे लिए कि व्यूअर्स के लिए? हमारे लिए अच्छा नहीं, मैं तो व्यूअर्स की बात कर रहा व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ. था. हाँ, मैंने एक बार देखा वो पॉडकास्ट. Yeah, exactly. वही तो बोल रहा हूँ. We realized that it was boring. तो हमारे लिए boring था. Not as Finally, मतलब मैंने भी मई 18 से बंद कर दिया. मैंने भी 3rd एपिसोड के बाद देखना बंद कर दिया था. उसका मैं सिर्फ एडिट कर रहा था. तो देख जब मैं कुछ डाउनलोड पे डालता था ना तो मैं बैकग्राउंड में पॉडकास्ट प्ले करता था. तो वैसा मैं तो बिलीव क्यों नहीं हो रहा है कि पॉडकास्ट बोरिंग था? तो सुना नहीं है. नहीं, मेरे को मालूम था बोरिंग है. तो बनाते क्यों थे? बिलीव हो रहा है. इवेंचुअली इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लाइक दिस पॉडकास्ट व्हिच इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द Because it स्टार्ट. was fun for us to record. हाँ भाई, see we did it because we had fun. We had didn't fun. care about you guys anyway. No, Like no, now. That's not it, right? हाँ क्या? Please like, share, subscribe. Guys. Don't listen to him. This guy is not. This guy is a coder. हाँ. Doesn't know anything about anything. Okay. Except Every- nerdy, tweeting nerdy stuff on Twitter that nobody will understand. Hey, I think he's an influencer. at least I don't wait. I will bring Atik's tweets now. ठीक है? Nah. He said. ये स्क्रीनशॉट करने मेरे को these डालने का नहीं. These things. Wait. I have this one very specific tweet. Do you know which tweet I'm gonna pull? I'm thinking of 4 or 5 tweets at this. किधर है? लेकिन बहुत मतलब कितना tweet करता है? I mean, I also like a lot. Like हाँ and तो likes retweet तो a- है नहीं ये tweet ही. Like and retweet a lot. हाँ तो the tweet is if any tall अरे thing. ये पहले वाला पढ़ना. मैं बिना context में पढ़ूंगा. बिना कुछ. Liberal brown girl wants to confess her love for me. This is your last chance. The comments on your tweets are so good. Engagement. Oh, तेरा हाँ ना, तुम लोग influencer का है फुल बे. ग्रुप का ही ऐसा तेरा क्या हुआ? influencer है बे. हाँ. अरे what my friends do is to mock me, they just spam the same comment, same gif in the comments. हाँ. So yeah, that gives me a lot of engagement. Dude, I remember this one tweet Atik made us. I think तो बहुत emotional and ये होके tweet किया था वो. And the tweet was something along the lines of, if you find that everyone in your group is better than you and this and that, Oh, yes. just remember that they are also Thinking the same of हाँ, you. they're also thinking the same तो ऐसा. And the comments were just, no, we don't think you're better than us. We don't think you're better than us. मैं जो हंसा ना, I commented that and I screenshotted it and I sent it to 3 people. हाँ तो कॉल पे भी आके बोला था. That was the first time I was like, maybe democracy is good enough. Yeah, so yes. Moral of the story, follow my Twitter guys. That's how you plug your Twitter guys. हाँ. ये ना ये इधर अतिक का पॉडकास्ट बन रहा है. अतिका हाँ. I'm He knows how to. the unwritten host guys. I'm the undecided host. कौन में बैठा है? Yeah, host को नहीं बैठता है ऐसा. वो पीछे से कंट्रोल करता है. समझे? It's not obvious that I'm the host. हाँ हाँ. It's a very Smart. subconscious thing. बोलना नहीं था. सबसे ज्यादा बात नहीं कर रहा इधर फिर भी सालों. उसको लग रहा है कि बहुत शाना है वो. हाँ भाई. अरे बता. क्या है ये यार? कैसे हो गया? Guys, I am Twitter IRL. Don't take anything seriously. Oh, how dude, everything we say here is gonna be recorded and someone is gonna take it out of context when I we... have to delete a couple podcast episodes basically. Before my HR hears them or anything, I need to delete those things. कोई नहीं, तेरा पॉडकास्ट आपने देखा, HR का देखेगा. Exactly. मैं तेरा एक पॉडकास्ट देखा था, आई रिमेम्बर, विद बोहेर, एंड तुम लोग रूम में बैठ के वो चेयर्स होते हैं ना कंप्यूटर लैब वाले, हाँ उस पे बैठ के दीज गाइस वर टॉकिंग एंड सो ही आस्क्स बोहेर, आई थिंक वी माइट अटैच अ क्लिप और समथिंग लाइक, ही आस्क्स बोहेर ऐसा कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, and Bohe replied, just arranging my room. and the room is a mess. It's not even clean. उसको फ्री टाइम नहीं मिला ना यार. Bro, Wait. That was my room. that was your room. Yeah. No, I thought that's Boher's room. तेरा पॉडकास्ट तेरे घर पे शूट. नहीं, तेरा पॉडकास्ट बोहेर के साथ बोहेर के रूम में शूट किया था तुम लोग जाके. I remember. Boher का room? I've never been to dormitory. तो किसका रूम था वो? मेरा रूम था रे, मेरा. ना और obviously वो दो लोग तो हैं. and the thing is that is my brother's side of the room, so that's not clean. मेरा side clean था रे. अच्छा, ओ you're just putting your ब्रदर्स साइड ऑफ द रूम. ये मतलब ये अरे बंटवारा कब हुआ? मतलब देखो वहाँ भाई नहीं है ना. है. है. हाँ तो वो side you didn't know you had a big brother. Elder Yeah, brother, yeah. sorry. नहीं है मैं घर. तो मैं भी नहीं देखा. तो वो साइड में मेरे भाई का बेड और डेस्क है बेड के ऑपोजिट, तो वो उसका टेक्निकली उसका हाफ हो जाता है, एंड दैट्स नॉट वेरी क्लीन.
मेरा साइड बहुत क्लीन होता है. I have never Because seen that's that not part on of the camera. movie. You can see. ये मेरे को आगे एक बार देखना पड़ेगा. हाँ भाई. आज एक रूम को तुम लोग ऐसा कैसा हाफ आवर डिवाइड. कितना दिखाता हूँ, मेरा it's very मेरा obvious. इतना ही होता था. Very obvious. अगर झगड़ा हो गया तो you can't come मेरे साइड पे. मेरे इधर ये सब नहीं होता है. मेरे तो नहीं, हम हॉल में सुलाते हैं इसको. इसको. रूम ही वैसा बना है, मतलब वैसा है. उधर मेरा डेस्क है, उधर मेरा बेड है, उधर भाई का डेस्क है, इधर भाई का बेड है, तो हाफ. ओ हाँ, यही अरेंजमेंट था. ओ यस. वो बोल रहा है उसका घर है, उसका पॉडकास्ट है, तो सुन क्यों नहीं रहा है? नहीं बोयर का घर कैसा है लड़का. तो आई थिंक तू बोला था कि आई लाइक अरेंजिंग माय रूम या जो भी. जिसका घर था वही बोलेगा ना, दूसरा कोई बोलेगा. हाँ, that was yeah. Arranging, yeah, बराबर मेरे को नहीं मिला. हाँ, so arranging the room मैं करता है. अभी वो फंस गया. मेरे को नहीं मिला. मैं करता है arranging the room, but वो मेरे भाई का साइड था, बोल रहा हूँ. मेरा साइड बहुत क्लीन Okay, है. so why would you record on the unclean side? अभी तू फंस रहा है तो तेरे अरे को क्योंकि वहाँ लाइट बैठ how do I explain? Yeah, उधर लाइट बैठा है. तूने मेरे डेस्क का लाइट देखा है? तेरे मेरे डेस्क का लाइट देखा है? अंदर चेहरे दिखता नहीं मेरे डेस्क के लाइट में, पीछे आ जाता है पूरा. तो रिंग लाइट है. टिकटॉकर डालती. धंधा बंद करवाया ना तेरा मोदी. मैं एक टिकटॉक डाला, मोदी गुस्सा हो गया बे. एक टिकटॉक डाला बे, बोला अतीक कैन नॉट बी अलाउड टू कम ऑन टिकटॉक, डिलीट करो भाई. अरे तो टिकटॉक के वेबसाइट पे हियर समथिंग आई नोटिस. टिकटॉक के वेबसाइट पे जाते हैं ना तो लिखा आता है टिकटॉक इज बैड और 5 टिकटॉक चल रहे हैं. हाँ, नॉट मेकिंग दिस अप. उस दिन मैं देखा था because I was watching this tutorial on how TikTok का entire network system works, which is very nerdy to think about as a TikTok in Not that. a tech podcast, guys. Not a tech podcast. Everything में ये भी आता है. Dude, it's gonna be so confusing every time we say everything. मेरे दिमाग में Someone आप has आता to है. figure out कि whether we're talking about the app or just everything in general. So okay, this was such a problem with Sanjay because once he was telling this story and the entire time I was like, ये everything app में ये कैसा हो रहा है? And then I realized वो normally बात कर रहा था. And it was a 15-20 minute long conversation. तो उस दिन we decided we're gonna call everything app. The everything app. वेट, आज संजय बात करोगे बाप रे. Podcast है क्या करे और? कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा है. चालू है. विल कट इट. नहीं ये सब यही तो रहना चाहिए. Where you going? अट्टे मस्त है. अरे मैं तो मम्मी को पूछता ही नहीं. पूछना भी हाँ, नहीं बिकॉज़ चाहिए, वो ज्यादा तेरी मैं मम्मी है, राउंड दोस्त लोग भी थोड़ी. नहीं मैं लोकेशन देख लेता हूँ. नॉट इन मेकिंग द सब कौन? लोग मम्मी का होने. अरे यार मेरे को बार बार पूछना पड़ता है किधर हो कब आओगे, कार चाहिए रहता है तो मैं लोकेशन ही ले लिया. ब्रो मेरे को ये समझ नहीं आया. रिमेंबर दैट मीम ऐसा फ्री वाईफाई एंड 10 लोग जा रहे हैं अंदर, साथ 100 लोग जा रहे हैं एंड फ्री बुक्स एंड कोई नहीं जा रहा. व्हाई डिड दे गो टू द फ्री बुक्स वाला सेक्शन एंड जस्ट यूज द वाईफाई उधर का? Because the entrance is the same place, but the actual places are 10 kilometers apart. क्या बकवास किया That's the वो? only possible. नहीं पता. That's the only possible तुझे explanation. नहीं पता. How did you come up with that so quickly? अरे because it's the truth. तेको नहीं मालूम. You didn't get the memo. क्या हाँ, तेरे को नहीं मालूम. ईमेल आता है. बहुत अच्छा clear. ईमेल आता है. ये बना रहे हैं मेरे को बैठे बैठे. ईमेल आता है बे, मीम एक्सप्लेनेशंस का रोज सुबह सबको. न्यूज़लेटर है. Yes, it's called World Connect. ये इतना स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है ना ब्रो. ये इतना स्पेसिफिक Nice. ऑडियंस. So when you leave, connect. This is what you do. Bro, we are connect. Because we're promoting connect here. Quick catch up. Recap. अब तक क्या बात किया हमने? अबे वो नेक्स्ट एपिसोड नहीं है, वही एपिसोड मेरी क्या. Wait, quick, okay. Quick recap. क्या आप छोड़ रही है? Recap. नहीं देने का है. अच्छा ठीक है तू टॉपिक. हम लोग Recap of the क्या last few इंटरेस्टिंग months. चल रहा है ऐसा तुम बोल लोग के रहा हूँ. लाइफ? हाँ अच्छा वो हाँ फिर कर तू चुप. Recap of the last few months. तूने मैं क्या वही बोल वो मेरा क्वेश्चन भी वही था, क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है? Life Corona is में- back, guys. क्या? Corona is back. अच्छा कोरोना मेरे गया को था क्या वो? प्रीवियस एक सेमेस्टर और. ये I find तुझसे कुछ Bro, कोई नहीं रहा. so the एक semester. spicy news of the week is that इनका offline होने वाला है शायद exams. Final year का. नहीं. फाइनल ईयर का. sure? I heard बोर्ड्स rumors. भी ऑफलाइन हो रहा है. I heard rumors. नहीं. नहीं ना? You didn't deny it. नहीं, it's not actually नहीं होगा. I don't think so. आई थिंक होगा. I आई think थिंक होगा. हमारा भी एग्जाम्स ऑफलाइन होगा. हमारा लोग भी का हो होगा. सकता है. तुम लोग का तो होने नहीं वाला बाद में नहीं फाइनल ईयर नहीं ये ये वाला ही? हाँ ये सेम आल्सो आई Let's थिंक वो see, ऑफलाइन let's होगा. see, let's बिकॉज हमारा हियर्स द देखते थिंग. हैं. नहीं. Here's the problem, right? Restaurants, ये सब जो institutions है, they can open very quickly and close very quickly. You can get the employees on board and yeah. With college, getting started is so hard So because you have to difficult. do all the stuff teachers का ये management और ये सब exactly. before students come in.
तो जब तक colleges get done with that process, the next wave comes and they have to close again. जैसे अभी हुआ, हमारा college is just gonna start and then next wave came and वो नहीं कर पा रहे. So what they're gonna do is they're gonna figure it out by now. क्योंकि मैंने भी कर लिया अभी and I don't even work in a college. तो they're gonna figure it out and they're like, how can we do damage now? Because it's about damage only at this point. They don't care जो हमने किया है ना उनके साथ पिछले 2 सेम्स में. तो they're gonna teach online and they're gonna take exams offline. I think वो करेंगे वो just to. Okay, fine. अनफेयर है ब्रो. तू ऑनलाइन सिखा के ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले सकता. Here's the thing, people keep saying this ऐसा also says this कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, but what are you gonna tell them? ठीक है. प्लीज Because एक सेम नहीं 4 महीना बचा है बस. because they'll be like, the first argument people give is you taught us online and you're taking exams offline. So they'll be like, if we taught you online, then what's the difference between an online exam and an offline exam? एटलीस्ट 5 पॉइंटर्स. नहीं अरे वो मैं उसका वेट कर. हाँ तो Difference between online washing और machine. offline. Washing machine का Here's the thing. They will ask you what's the difference between online and offline exams. Why do you prefer online? And that time you can't bring this up कि we can cheat there easily या ऐसा कर. This is an official argument या जो भी. Correct. So you have basically no basis. The students have no basis कि क्यों online होना चाहिए I exams think में. the students know this, Advait. क्या? It's not like nobody No, knows. because people give actual ये कि this is an actual argument that I see everyone give कि People are serious with this argument. या कि पढ़ाया online तो exam भी online ही होना चाहिए वैसा. तुम लोग ऑफलाइन पढ़ाओ. लेकिन एग्जाम्स मैं ऑनलाइन आएगा कॉलेज बट अच्छा. एग्जाम घर से. ठीक है. थैंक यू. ये अनफेयर ना भाई, ये सब क्या है? मिडिल ग्राउंड होना चाहिए भाई. ये पास आउट हो गया ना इसलिए ये ऑनलाइन इसमें पास आउट हुआ. 6 महीने समझ गया यार. हाँ हम लोग का सबसे लकी था, हम लोग को ईडी नहीं देना पड़ा. अबे ईडी ED हमें was my easy है, one of इतना my बहुत most easy. favorite subjects, so like that's okay. लड़कों के लिए इजी है आईडी. No, because the teacher favored guys, so I gave them more marks. नाम बोलो. Nope, not coming. Oh, okay. अच्छा मेरे को शायद पता है तेरा ईडी वाला कौन था. हाँ हाँ Was it? बीप हो रहा है बोल. I don't remember. Was he short, slightly balding? नहीं नहीं वो तुमको मैथ्स पढ़ाया था क्या? नहीं 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 हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रे. हाँ, EM पढ़ाते थे वो. उसने तो मैथ्स बोल उसने तो मैथ्स बोला. हाँ. नहीं नहीं हमारी मैथ्स मैम वाज वेरी नाइस फर्स्ट टाइम के. आई लाइक्ड. मेरे को ये सब कुछ याद नहीं. तू आया किधर कॉलेज? ये कौन सा फैकल्टी बोल रहा है वो भी मेरे को नहीं समझ रहा. शॉर्ट बॉय Yeah, कौन है So, अपने कॉलेज में? all शॉर्ट of this time that Tejas did not come to college, he was making what? he was making films, so you can go watch his new color grading reel, literally reel. It's not an Instagram reel. It is an It's a Instagram show reel. reel. Technically, it's a It's a show show reel. reel, Yeah, huh. it's a show reel. It's called a legit. That's what originally reels were before they came and contaminated it. Like they contaminated the word, but you can go watch his reels. You can watch his show reel on Instagram reels, basically. Very uncomfortable to say it out loud. हाँ ना. Don't like it. There's this one more thing you did, right? The क्या था? Music video. म्यूजिक वीडियो यार. उसका point समझा मेरे को. वो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो लोग का. तो कौन सा music video? But what were they? You didn't know he मेरे को भी नहीं edited a music video. The one वो क्या नाम उसका भाविक क्या उसका नाम? नहीं वो नहीं. वो तो अलग है. I don't know yours. अरे ये तो वो नरीन का फ्रेंड की बात कर रहा है. नरीन के फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. नहीं ये मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो लोग डिजाइन Artist का नाम क्या? में अरे somebody that I used to know that वो वो गाना song का है नाम उसके है. ऊपर म्यूजिक वीडियो बनाया. हाँ. हाँ तो फिर ठीक है. Nice. नहीं not an but original. it was something like what were you trying to depict? It was all as a white ये. हाँ the set was नहीं, the set whole. was, हाँ. If you watch They this, designed the set. वो लोग का फाइनल प्रोजेक्ट था वो. They were design students. But how did you get a white NID? set and ये सब पूरा वो जगह? लोग क्लासरूम लिया. अरे वो लोग का रहता है. क्लासरूम लिया और वो लोग सब जगह पे MDF बोर्ड्स डाल दिया. ठीक है. Oh हाँ. वो लोग ने विंडोज से लेके सब कवर कर दिया MDF बोर्ड से और फिर उसको पेंट किया. Damn, that's so much just work. design student stuff. हाँ. Like you wouldn't think this. I was like कि they just took a set. नहीं ये वो लोग ने कॉलेज में क्लासरूम में किया. वही नहीं. क्लासरूम में. So But wouldn't it be cheaper to just rent a set for a day? नहीं, matter what. बहुत एक्सपेंसिव. Bro मुंबई में रहता है. अरे मुंबई में नहीं रहता. Sorry. मुलुंड वाले बोल रहे हैं मेरे को ये. मुलुंड is Mumbai. It is more expensive than Vashi. Fuck.
I'm pretty sure that's और एक तो ये वाशी नहीं है, ये लड़का वाशी में नहीं मैं है। वाशी की बात कर रहा हूँ ना, सैनपाड़ की नो थोड़ी नो बात कर रहा हूँ। दिस एरिया अच्छा ये सब छोड़ मुलुंड वाशी सॉरी मुलुंड मुंबई में आता है हाँ हाँ रे, ब्रो, मेरे को ना मुलुंड थाने में आता है नहीं रे, येड़ा है क्या रे? थाने किधर आता है? थाने डिस्ट्रिक्ट अपन भी थाने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट अलग है, थाने ये अलग है। वही मैं सोच रहा था आई थॉट थाने में आता है। अलग है। मुलुंड थाने मुंबई सिटी तो नहीं मुलुंड मुंबई 82 ओह आई डिडंट नो दैट थाने के बाद स्टार्ट होता है मुंबई का स्टार्ट है। जस्ट इन मुंबई हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से बॉर्डर शुरू हो जाता है भाई। ब्रो ये थोड़ा लाइन शुरू होता है पर ठीक है तू बॉर्डर कर ले। एट लीस्ट यू ट्राइड Yeah, at least I'm on one correct side of the border, guys. भाई मैं वही बोल रहा था, ये थोड़ा और अपन खींच सकते हैं। आई थॉट यू आर मेकिंग सम अदर जोक नहीं नहीं नहीं, I was making that specific joke. ये रहने वाला नहीं 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 यार भाई। ब्रो यू आर द I was वन not पर्सन हु कैन joking. से दिस विदाउट गेटिंग इन ट्रबल राइट तेरे को तो अलाउड है। तेरे को अलाउड है ऐसा ओए तुम कुछ नहीं हो। मतलब ऐसा देयर आर सम जोक्स दैट ओनली यू कैन मेक इन पब्लिक Yeah, obviously, yeah, but not this one. जैसे समय यू नो समय राइट द कॉमेडियन रायना, रैना। पूरा नाम बोल समय रैना हाँ he makes such controversial Kashmir हाँ, jokes हाँ, and he's allowed to do it because yeah. he's allowed to do it on a technicality basically Yeah, exactly, because he's from Kashmir and stuff. I remember this is his joke right so I'm just repeating it he's like Kashmir wale can't ऐसा rebuttal या जो भी ऐसा क्या Argue होता है नहीं कर get सकते। angry at ये because net ही नहीं है उनके पास से देखेंगे कैसे और stuff like that and I was like Internet, okay. damn. Internet नहीं होता है। Yeah. लेकिन वो लोग अभी तक नहीं दिया इंटरनेट। नहीं उधर सबसे अभी 2G एक्टिवेट किया है 3G आना बाकी है yes, so the third wave of COVID is finally here. I finally got it after resisting for 1.5 years. But it was this is very your mild. first time having COVID Yeah, but I recovered in like 5 days. Very weird, but हम I लोग did. तो लास्ट हो पॉडकास्ट गया। शुरू भी हुआ था। oh हाँ the last podcast we had उसके बाद me and Akshita got COVID And me and Vidas didn't, so I don't know what that tells about it. कि COVID को भी तुम नहीं चाहिए चलेगा ब्रो, बस ये 6 महीना संभाल लो। एक सेमेस्टर का है। चलेगा bro। वेदस क्या करता था पता है आई रिमेम्बर दिस सो एडमेंटली वी वर आउट ऑफ द ग्रुप आई थिंक हम दोनों थे एंड वो सबको मास्क निकालने बोल रहा है खुद मास्क पहना हुआ है एंड ही इज लाइक स्प्रेड होना चाहिए मुझे नहीं होना चाहिए What the hell? इसको भी हो गया ना। नहीं हुआ ओ हाँ तुझे भी हो गया फुल ना फैमिली को हुआ था ना। हाँ मेरे भी फुल फैमिली। व्हाट डज इट से अबाउट हिज फुल फैमिली बता क्या बोल रहा था तू सब लोग एक घर में रहते हैं, थोड़ी सी। हम भी तो एक घर में थे सब अब तो इधर इधर बैठे इम्यून सिस्टम गंदा है मेरा हाँ, विदस से। पहले को सब फालतू जोक मारने वाला था वो मेरा तो फैमिली आ गया आई एम लाइकिंग Actually, when it comes to mask कसम I have a very interesting fact for you guys. So N95 masks, they are very effective because they are electrically charged. हाँ dude I you saw that I video saw right that video, that yeah. was so ये So cool, bhai. मैं बोला ये कैसे So- कर रहा है ये लोग? basically instead of trying to act like a filter it just attracts all the small particles Acts like a magnet. हाँ it's like a magnet वो वीडियो देख के हमने क्या ही बोल देगा तू मुझे ऐसा जो पता नहीं है ना I was like Exactly, wait exactly. no way And I will try to link the video ऐसा ही है So cool, such a cool video. उसके ऊपर मैं रील बनाने वाला हूँ छोटा सा। हाँ ये आगे कंटेंट खुद ओरिजिनलिटी नहीं है मेरा पूरा I'm thinking of making an entire reel series called Today I Learned because I learn random facts every day. तो मैं बोला यार कहीं तो यूज आज क्या सीखा हाँ आज क्या सीखा आज अभी तो दिन शुरू हुआ है बताता हूँ मैं by the end of the by the day. end But of उस the- दिन मैं ये सीखा कि ये वो EOD वाला है कि I'll submit it by EOD आदत हो गया ना तेरे को लिखने का so usually at offices EOD doesn't happen, अगले दिन ही होता है। हाँ वही EOD मतलब तू अक्सर- समझ गया। नहीं ये वाला मैं end of day तक बता सकता है actually. So the other day I learned that the shape of a continent it actually affects how farming develops on the continent. The shape of the continent. How? So Asia का shape कैसा है? काफी horizontal है, right? हाँ। Asia is like this, but तो America is ज्यादा like this. जगह है तो ऐसे काम नहीं, करता है अरे complete तो करने दे. So and America is tall, हाँ हाँ right? हाँ So what happens is when you move laterally, right? The temperature, pressure kinda is the same. So you don't spend a lot of time adapting to the climate when you're moving horizontally. And that's why it's easy to develop farming on a continent that's shaped horizontally. America is very vertical. हाँ, हाँ. तो लोगों को ऊपर से नीचे जाने में लग जाती थी. Temperature change, humidity, pressure काफी change होता. So it's Damn. difficult to adapt to the
local climate, and then you have to grow. It takes a lot. This is stuff you don't think about, right? And I learned this in that Atomic Habit. For some reason, it's there. हाँ मैं वही सोच रही तेरा हूँ, I have Atomic read Habits का this book है? somewhere. हाँ है ना. हार्ड कॉपी हम्म. नेक्स्ट टाइम लाना. इंशाल्लाह खत्म होने के बाद. बहुत टाइम से मेरे खत्म करने पास का भी ट्राई है. कर रहा हूँ. मेरा भी वेट कर लेता, मैं भी अपना बुक खत्म करके देता तेरे को फिर. जो 1 साल से रखा है. तेरे पास मेरा कौन सा बुक है? वापस दे दिया ना. मैंने कोई लिया ही नहीं था, तू ही मेरा लेके बैठा है. मेरे को कोलैटरल ले लेना चाहिए था तभी. It is now easier to buy another book जो वो ले गया. But नहीं, this is one more. Okay, so this is something I learned the other day. I think बहुत पहले when I was starting with Android development. So it's the same similar fact as in people get very shocked as well. When you tap on a button and then you just slide it off ऐसा, you're like oh shit ये नहीं tap करा था गलती से, and you just slide it off ऐसा screen के कोने में thinking phone will not notice and it doesn't get clicked. The thing is the phone does notice it. It just cancels it. So someone had to code that entire gesture in कि Oh damn. someone might just press it and try to act like कि कुछ नहीं हुआ है ये. So someone put in work and you think you fooled the phone. That was something shocking जो That's मैंने funny. ये किया That's था. funny. That's इस पे भी actually reel funny. बना. Thank you. हो गया आज का हो गया. आज का That- today I learned. That's it for the Scrum podcast, guys. Go check out my reels now. जल्दी कर, डैडी का कॉल आ रहा किसके? है मेरे. तुझे से पता. Okay, guys. Vidus के dad का call आ रहा है. So we're gonna have to end the podcast. But we'll be back very soon. If you like this podcast, if you like this kind of content where people are just sitting and chilling and hanging out, subscribe, like, share this with someone else who you think would like it. Kind of weird, who would like it? But yes, we have this. He's taking us down. Awkward कर दिया India. जल्दी कर, फोन उठा जल्दी लिया कर फोन उठा. Okay. See you next time. अबे कुछ और तो बोल. Until तू एक्चुअली फोन उठा नहीं. हाँ अरे obvious daddy है.